अस्सलाम अलैकुम। आज हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू ह्यूमन बींग्स रेस्पायर? सो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी system consists of so many things. It starts with our nostrils, then nasal cavity, pharynx, trachea, lungs, bronchi, bronchioles, and alveoli. So many things together constitute the respiratory system in human beings. So we will talk about each of these parts in detail one by one. Before that, let me introduce you with each of them. The number one is nostrils. Nostrils are nothing but the nose. So a nose, we have two nostrils. So after that is nasal cavity. The nostrils will extend to the nasal cavity. After the nasal cavity comes to pharynx. Pharynx के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में. What is pharynx? It is a common point or entry both for food and air. I can say pharynx is a place where it differentiates the food and it sends food into the food pipe, esophagus, and it sends the air into air pipe. After that, the next is trachea. Trachea is nothing but the windpipe. This trachea will go and it will reach to the lungs. There are pair of lungs. इसके बाद है ब्रोंकी. What is ब्रोंकी? जो ये ट्रैकिया है ये डिवाइड होता है दोनों लंग्स में. So the branches of trachea are known as bronchi. The bronchi will further divided into smaller branches that is known as bronchioles. और जो ये ब्रांचियोल्स हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं स्मॉलर ब्रांचेस में और उनको क्या हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम alveoli. So now you are aware of what are the different parts of the respiratory system. अब हम हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में. So let us start with nostrils and the nasal cavity. Nostrils क्या है? Nostril actually ये एक ओपनिंग है. It is an opening through which air is taken. और जो nostrils हैं उनमें फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं. उनका काम होता है जो हम एयर लेते हैं वो उसको फिल्टर करते हैं. So nostrils it is an opening through which air is taken in. और वहाँ पे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो फिल्टर करते हैं एयर जो हम लेते हैं. उसके बाद आता है नेजल कैविटी. जो नेजल कैविटी है cavity where the air reaches through the nostrils. Central septum separates the left and right air passage, dividing the two nostrils. What is central septum? Central septum इसको हम बोलते हैं nasal septum भी. जो ये nostrils हैं टू होल्स ये डिवाइड होते हैं एक वॉल से, उस वॉल को हम बोलते हैं central septum और nasal septum. Actually, it separates the left and right air passage dividing the two nostrils. That is central septum और nasal septum. उसके बाद जो nasal passages है ये लाइनड होती हैं ciliated epithelium से और mucus से. What is ciliated epithelium? It is the epithelial tissue which is lined with cilia. Actually cilia क्या है? ये fine hair-like structure हैं and it is also lined with mucus. Now what is mucus? It is a slippery substance. So what does they do? Mucus being a slippery watery substance, it tries to moisten the air. It tries to make the air little moist. And what does cilia do? Cilia tries to block the dust particles and microorganisms or any kind of germ present in the air. होता है कि जो म्यूकस है ये मॉइस्ट करता है एयर को जो हम एयर लेते हैं, और जो सीलिया है वो ब्लॉक करता है जो भी डस्ट पार्टिकल्स माइक्रोऑर्गेनिज्म जो एयर में मौजूद होते हैं जो एंटर होते हैं हमारे नोज़ में, वो इसको ब्लॉक करते हैं.
So actually this cilia, mucus as well as fine hairs which are present in nostrils, they help to prevent the dust particles entering inside our body. The nasal cavity and the oral cavity are separated by a bony plate. Now the next part is pharynx. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जाएंगे. थैंक यू.